permanent, irreversible vision loss. So what is gone. What you have, let's save that. You take so much of care for your skin, you keep on applying all the sunscreen and everything. Just wear the simple sunglasses. Especially I tell these mothers that don't give them this screen because they try to focus so much and they start rubbing their eyes. Yeah. Also cylinder number आते हैं. When you expose yourself to the screen, तो एक तो आपका जो रेटिना होता है उसमें धब्बे पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं. It is called age-related degeneration. Ideally, more than 2 hours will have कुछ ना कुछ side effect on your eyes. Especially there is a disease called computer vision syndrome. WHO has framed. Glass को बहुत scratches हो जाते हैं. You will decrease your vision. Because of that. Yeah. Because your eye will start straining. जो scratches होते हैं ना उसमें से वो जो light आती है वो फैल जाएगी. So every 6 to 7 months, if your glasses are fine, scratch free है तो ठीक है. पर every yearly I feel change the glass. Hi everyone, welcome back to Level Up with Anona, where we take you one step ahead with every conversation of ours. Today's episode is brought to you by Shade Brothers Pratikar Tea. And आज का conversation मेरे को इतने emotion से लेके गया है ना. मतलब आई बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो आई थिंक हम बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं. लाइक इस conversation के बाद तो I was actually scared and I really want to go tomorrow and get my eye checked. Because बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों में फैल रही है, यू कैन से, या एवरी अदर हाउस हैज दैट आई इशू, दैट आई प्रॉब्लम. चश्मे लगाना, लेंस लगाना, इट्स सो कॉमन. बट हम क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? क्यों? जब एंड तक पहुंच जाएगा तब देंगे. आई थिंक द डॉक्टर टुडे, डॉक्टर अंशी राठौड़, उन्होंने बहुत सारे मिथ्स ब्रेक किए व्हेन इट कम्स टू आई. तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, जस्ट गो एंड वॉच द फुल एपिसोड. अगर कुछ भी क्वेरी हो तो जस्ट गो एंड राइट इन द कॉमेंट सेक्शन. बट देखना, क्योंकि आंखें, इसमें एक जो मेन चीज उन्होंने बोली है ना, इट्स नॉट रिवर्सिबल. वापस ठीक नहीं होंगी. तो जहां है, जितनी है उसे ठीक रखो, उसे खुश रखो. प्लीज गो एंड वॉच द एपिसोड एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. Namaste, madam. How are you? I'm great. Thank you so much. Super excited, yaar, to have this. So am I. I mean, जब आपसे first time मिली थी and the kind of energy that you have, मतलब एक तो आपकी professional journey is तो like somewhere else, but your personal journey also. I mean, I really want to share that here. But again, thank you for joining us. Even I went through you and I was also stunned with you. Oh my God. Thank you. Thank you so much. तो यही है, because you're a doctor, you're an ophthalmologist. Yeah. तो मैं पहले जो basic question है start ही उससे करूँगी. आपने अपनी ये field क्यों चुनी? Do you want an honest answer? Yes, of course. So all through my life, I've seen my father. My father's an ophthalmologist as well. So I've seen him do only that. So I know nothing else than this field. So it became something that I conditioned my mind that, I have to do this. It's like a family business thing. I want to do this. That's why I took this field, and suddenly I fell in love with this. Is it? Yeah. But ऐसा नहीं होता, like, because डॉक्टर में इतनी सारी different branches है, तो कभी आपका मन भी नहीं हुआ कि you want to go somewhere else? तो अर्जुन की आँख पता है ऐसे ही देख रही थी. मेरा ऐसे बस ऑप्थेल्मोलॉजी में ही जाना है, बाकी सब गया है. Then you already, आपका mind पहले से ही पूरा prepared था. Absolutely. Wow. So पर मेरे को जब when I was researching for this particular topic, eye basically, तो do you think, मेरे को एक ही चीज दिमाग में आई थी कि eye is such a body part
जिसको जब तक कुछ प्रॉब्लम उसमें हो नहीं जाती ना, कोई इंसान उस पर ध्यान ही नहीं देता, बिकॉज यू आर ट्रीटिंग सो मेनी पीपल. डू यू फील कि दिस इज ट्रू? I think you're absolutely right. We've taken our eyes for granted. In terms of, we see that you're exploiting your eyes. Your screen time is high. You do a lot of eye makeup. You keep on rubbing your eyes. You don't take care of your eyes as much as you take care of your skin, your head, heart. You do not do that. So I think we've taken it so much for granted that we neglect its health. आई एक्चुअली मेरे को डीप डाइव करना है इन चीज़ों में, आई मेकअप आई एम न्यूअर पर मैं डीप डाइव जरूर करना चाहूँगी, बिकॉज आंखें नहीं, दुनिया जिसके लिए इतनी मेहनत करे वो ही नहीं दिखेगा, तो आई थिंक क्या रह जाएगा लाइफ में. तो अगर मैं आपसे पूछूँ ऐसे, बिकॉज यू आर डीलिंग विद सो मेनी पेशेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू हैव वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉस्पिटल हियर इन अहमदाबाद व्हेन इट कम्स टू आई. तो सबसे ज़्यादा कौन सी डिसीज कह लो या प्रॉब्लम्स कह लो जिसको लेके लोग आते हैं आपके पास? So usually we see it in different age groups as well. In kids, we have seen a lot of exposure to screen these days. In school, outside school, at home. So we've seen a lot कि वो लोग का exposure to mobile is so much. So they've started getting glasses, numbers. They've started getting squint, जिसको हम तिरछी आँख बोलते हैं, त्रासी आँख बोलते हैं in Gujarati. There's this condition called as lazy eye. We've seen that. And mostly what we see in elderly patients is cataract, because it's an aging process. जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, जैसे it's an aging process of your eye. And also we see glaucoma, जिसको झामर बोलते हैं. So these are a few things that we keep on seeing on regular basis every day in and out. Okay. स्क्विंट एंड ऑल ऑफ दैट, वो भी इज इट, ये जो सारी आई की डिसीजेस होती है ये जेनेटिक होती है या दे आर लाइफस्टाइल बेस्ड आल्सो? सो सर्टेन डिजीजेस आर जेनेटिक, लाइक फॉर एग्जांपल ग्लोकोमा जिसको हम झामर कहते हैं, दैट इज वेरी मच जेनेटिक. There are certain diseases in your retina जिसमें night vision कम हो जाता है, पेरेंट्स को होता है तो उनको होता है. चश्मे का नंबर, that can also be genetic. But what we have seen now is with the increased dependency on mobile phones, laptops, जेनेटिक नहीं पर मोर अक्वायर्ड हो गया है. तो अगर मैं ऐसे कुछ परसेंटेज वाइज बोलूँ तो मेजर परसेंटेज कौन सी होती है आपके पास? सो इन किड्स वी यूजुअली सी दैट व्हेन बोथ द पेरेंट्स हैव ग्लासेस द चाइल्ड डज गेट ग्लास. बट अभी दोनों पेरेंट को ग्लासेस नहीं होता है तो भी आ जाता है, बिकॉज when we take history we've seen that they're dependent on mobile. खाना नहीं खाता है, मोबाइल लो बेटा खा लो. वो तो बढ़ता ही जा रहा है आजकल लिटरली. So the percentage in certain diseases I feel that 50-50 है. Not you can't really judge, but when you take down a deep history you realize that a lot is associated with genetics. अच्छा, a lot is associated. Okay. But okay, so जब ऐसे बोलते हैं, अगर मैं बेसिकली नंबर बढ़ गया या आंखों में ब्लर हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, चश्मे लग गए एंड ऑल ऑफ दैट, तो मेरे को आपसे एक बार साइंटिफिकली पूछना है. हमने कभी वो ध्यान नहीं दिया कि एक्चुअली हमारी आंख में हुआ क्या कि उस वजह से हमारे चश्मे लग गए, हमारे नंबर बढ़ गया. तो साइंटिफिकली अगर आप ब्रीफली थोड़ा जितना इजी भाषा में हो पाए. सो आई टेल यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर. एक होता है प्लस में नंबर और एक होता है माइनस में नंबर. जो प्लस में नंबर होता है वो नियर के लिए होता है, ठीक है. जो माइनस होता है कि आपको दूर का नहीं दिखता है, ठीक है. जितनी लंबी आपकी आंख होती है उतना आपका माइनस नंबर बढ़ता रहता है. जितनी लंबी योर आई इज व्हाट यू सी इज जस्ट 1/3 ऑफ योर आई. आई बॉल पीछे से पूरी इट्स इलोंगेटेड. सो जितना आपका आई बॉल लंबा होगा उतना आपका नंबर ज्यादा होगा. सो बेसिकली genetics, as I was talking, when both the parents have or one parent has, the child is highly prone for the eye to be little bigger. Okay. तो that is the basic physiology बोलो या mechanism बोलो कि हमें नंबर क्यों आता है. दिस इज जेनेटिक. अभी अक्वायर्ड की बात करो, बिकॉज हम देखते हैं कि बच्चे या एडल्ट, इवन वी, हम इतना नजदीक से देखते हैं, एम्बियंट लाइट में नहीं देखते, अंधेरे में वी कीप ऑन using our mobile and everything. So we've seen that what it causes stress on your muscle. So your muscles doesn't develop, it remains very constricted, and that is why you develop your numbers. Okay, अच्छा. तो पर आपने जैसे बोला कि elongated रहती है, and then
बट उसमें आई बॉल के साइज में भी डिफरेंस होता है लोग? Yeah, so I'm talking about the eyeball only. The size of the eyeball is bigger, the number is higher. बट ये हमें तो विजिबल नहीं होता ना, you're saying it's from the back side itself, like So there is something known as we take a scan to measure the length of your eye. कि भाई आगे से पीछे आपकी लेंथ कितनी है आई की? Usually 23 mm होती है, but when it's more than 23, 24, 25, आपके उतने माइनस नंबर ज्यादा होते हैं. और अगर आपकी 21, 20, 19 है तो आपके प्लस नंबर होते हैं. स्मॉलर देन प्लस नंबर. तो सपोज अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जिसके 4 से 8 का नंबर, तो जनरली आजकल के सब आ गया है, नॉर्मल छोटी एज पे भी आ गया, बट आप मानो एवरेज 25 to 30 एज तक में जिसका इतना आ गया है हाई लेवल पे उस पे, तो व्हाट शुड दे डू कि आगे जाके और एज में उनका और ना बढ़े? So usually we have seen that whenever they develop numbers in their teenage, then that is going to increase till the age of 20, 22. जब तक उनकी वो height बढ़ती रहती है तब तक वो बढ़ता रहता है. Because those makes sense. And usually when we see that because of certain environmental factors कि उनको number आ रहे हैं, तो they are usually 1-2 के बीच में रहते हैं. They don't increase much. जो नंबर इंक्रीज होते हैं वो इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ योर आई, बट दैट इज नॉट, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप फ्रॉम यू गेटिंग नंबर्स इफ यू आर प्रोन टू दैट. अगर आपको हाई रिस्क है तो इट्स नॉट गोइंग टू, देयर आर नो ड्रॉप्स और नो मैजिकल एक्सरसाइजेस दैट्स गोइंग टू हेल्प. ओके, यू हैव स्पोकन अबाउट ड्रॉप्स, आई वुड लाइक टू गेट इनटू दैट. बहुत सारे लोग हैं जो बस कुछ भी हुआ है चलो आई ड्रॉप डाल लो, चलो आई ड्रॉप डाल लो. दैट इज वन थिंग जो लोग करते हैं. सो व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दैट? मैं आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, आपके क्या कमेंट्स है व्हेन इट कम्स टू आई ड्रॉप? चलो आई विल आस्क यू समथिंग. आपको पेट में दर्द नहीं है तो आप दवाई लोगे? नहीं, ऑफ कोर्स. आपको सिर में दर्द नहीं है तो आप दवाई लोगे? नहीं. दिस इज अ ट्रेंड, यू नो, मुझे कुछ नहीं है पर मुझे दवाई दे दो, आंख में ड्रॉप डालने हैं. सी आई थिंक वी आर, as I said, we are exploiting our eyes. We have seen people using steroids in their eyes. आँख जल रही थी, they go to some pharmacy and the pharmacist will prescribe them steroid. Now steroid की disadvantages are way more than its advantages. We have seen के कोरोना के वक्त, you know, those who have taken steroid, इनको म्यूकोरमाइकोसिस हुआ था जो फंगल इन्फेक्शन था. So steroid should, so we've seen people are exploiting. Secondly, they use all these lubricating drops, refresh, eye cool, eye tone, what not. Ayurvedic, homeopathic, you name it and they're using it. I feel there is no need for it. Plain water is the best medicine for your eyes. Best. ओके, तो ये जो रिफ्रेश टीओस, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन ड्रॉप दैट आई थिंक सब घर में होती है, तो ये लोग जो डालते हैं जस्ट बिकॉज ड्राइनेस का, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड हो गया. एग्जैक्टली. तो डालते हैं तो ज्यादा डालते हैं तो उसका कुछ इशू आता है सर? सो नो, बेसिकली यू आर प्लेइंग विद द डायनामिक्स ऑफ योर आई. आपके जो आंसू है उसके डायनामिक्स से आप खेल रहे हो. व्हेन योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग आपके आँख के आंसू, वाई डू यू वॉन्ट टू आर्टिफिशियली पुट समथिंग? योर आई विल गेट डिपेंडेंट ऑन इट, और इवेंचुअली आपकी आँख वो आंसू बनाना ही बंद कर देगी कि भाई बाहर से तो आ ही रहे हैं ना, चलो मैं बनाना बंद कर दूँ. So you are causing harm because eventually you're getting dependent on that eye drops. And all eye drops have preservatives. आप देखो कि आप खाना प्रिजर्वेटिव वाला खाओ, फ्रेश ना खाओ, then you may develop infection in your stomach. The same thing is with your eyes. You know, so they are all preservative drops. So they're chemicals. तो आई कैन से कि ड्राइनेस के लिए तुम डाल रहे थे बट इवेंचुअली उसने और ड्राई तुम्हारी आंखों को करेगा. I think anything without prescription and monitoring of the doctor नहीं करना चाहिए. आपको एक पीरियड के लिए वो ड्रॉप डालने को बोला है, आपको हमेशा डालने को नहीं बोला. एग्जैक्टली. बट वी थिंक ये तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप है, इट्स लाइक पैरासीटामोल, खाना भाई चलेगा. ऐसा है. ओके, सो इवन दोस रिफ्रेश एंड आल्सो आर नॉट गुड. बट उसमें उनमें भी स्टेरॉइड्स है या नो? उनमें स्टेरॉइड्स है, प्लेन लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स, नथिंग एल्स. बट एनी व्हिच वेज है तो आर्टिफिशियल मेडिसिन, दे आर केमिकल्स. They are chemicals. Makes sense. Makes sense. Oh wow. Okay. And you spoke about eye makeup also. Oh yeah. Why not? Yeah. I applied. Let's address that elephant in the room. Yes. So eye makeup. I mean काजल. वो तो I think हर लड़की रोज लगाती है. It's like a daily thing. So true. तो कैसे फॉर? But how does it impact our eyes? I was one of those
people who would do eye makeup every day until I went into medical school and I realized, oh my God, this is causing so much of harm. But I tell you, जो आपकी वाटर लाइन होती है जहाँ पे हम काजल करते हैं, उसमें माइक्रो पोर्स होते हैं. जैसे हमारे स्किन पे पोर्स होते हैं, इससे माइक्रो पोर्स होते हैं, जिसमें से हमारा ऑयल निकलता है. आर ऑयल फॉर द आई. ठीक है, यू नीड ऑयल फॉर द आई टू रिमेन मॉइस्ट, to remain lubricated. Now when you apply kajal, you are blocking those pores. Sorry, you're blocking the way for that oil to come out. So what it's going to cause? Dry eyes. What is it going to cause? Infection. What is it going to cause? वो आपने देखा होगा, swelling हो जाती है, जिसको हम आंजुनी बोलते हैं, या sty in our medical terms, वो हो जाता है. People lose their lashes as well. So yeah, ये उसकी वजह से भी हो सकता है. Because see, anything is a chemical, and I told you, let me get you again to that point that we have taken our eyes for granted. अब पर इसके आपने ऐसे बोला एनीथिंग इज केमिकल, बट उसी पे फिर अपने मार्केटिंग गिमिक्स आते हैं ना, हर्बल काजल यूज करो एंड ऑल ऑफ दैट. I think nothing in the eye except for medication and water should be given. Okay. But Herbal, I mean, just because you said about herbal, there's nothing like herbal. आप घर पे भी वो जो करोगे, घर पे people do it with the आपको कारिया पे दिया करेगा. That is also what? Carbon. You're getting my point. That is carbon. And you're applying carbon when your body needs oxygen. Oh, makes sense. So I feel, as a doctor, I remember on the day of my wedding, I got ready and I was like, my parents will be so happy. Oh my God, my daughter's looking like a princess. And I came and my dad's like, go wash off your eye makeup. I'm like, I'm not doing that. My wedding is in 1 hour. I have a photo shoot. I am not doing it. So, I feel that's true. Not that because we are overcautious. Sometimes you apply, it's fine. But it should not be a regular thing. What about mascara? Same. Apply, but it's way better than kajal because you're not going locking up. Yeah, you're just using it on your lashes, which is, I feel it's better. I would use it every day if it's possible. So you two are saying nothing. I mean, seriously nothing. I would say that. Okay. I would prescribe you to do so. I'm just taking him some time to process it. I mean, this is the, let's see, tomorrow without kajal. Let's see how it goes. For sure. It's an addiction. It's an addiction. I need addiction. It's like तुम्हें ऐसा feel होता है that something is missing. Yeah, it's like I'm not looking good. Am I looking ill? I feel that it's an addiction. But what about, I'm just trying to find a solution out of it. I know nothing makes sense, but what about, so one thing is because you said pores block होते हैं, but what about putting it नीचे जो लगाते हैं या ऊपर, of course, the eyeliners and everything? That is fine. See, basically, if you are an occasional wearer, it's fine. But trust me, आप नीचे लगाओ पर waterline पे नहीं लगाओ, it will not look good. So it's not possible. And you will apply. And also, अगर ये, I have a pen or I have some eye makeup, I keep on using it daily, but I don't clean it. It is a good source for bacteria. Makes sense. So, it can cause a lot of infections. Yeah. So, either you keep the hygiene well, you discard it every month, but you have the entire bottle, but don't you reuse it. Anything when you open once expires in a month. Got it. Because preservatives only work till a month. Makes sense. That ये reel बनाऊंगी, and I think lot of girls are going to go crazy after this. For sure. No, but the source में पड़ जाएंगे. Any preservative has a shelf life. Yeah. They say that 2024 में manufacture है और 2026 में you can discard. That is only when the bottle is sealed. Once you open the mascara, kajal, you throw it out after a month because the preservatives which will help the bacteria not to grow, infection नहीं करेगा, वो 1 महीने में उसका काम खत्म कर. And people use it क्योंकि regular नहीं होता तो महीनों तक use करते हैं ये सब. करते ही है. और आप तो एक्सपायरी देखते ना, 2025-26 की एक्सपायरी. That is only when the bottle is sealed. Oh, But once you open the bottle, it's just one. It's 1 month. फिर पूरी bottle आपने एक बार भी use की, just throw, just discard it. Oh wow, makes sense. Yeah. Oh my God. Okay. Now I want to talk also about तो आपने infamous जब screen की बात करी तो
द ब्लू लाइट सिंड्रोम ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर हम चश्मों की भी बात करें तो बहुत आपकी इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम ब्लू लाइट्स एंड एवरीथिंग, तो काफ़ी चल रहा है मार्केट में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये जो ब्लू लाइट सिंड्रोम है कि ब्लू लाइट तुम्हारी आंखों पे रात को नहीं पड़नी चाहिए, स्क्रीन टाइम एंड फोन पे ब्लू लाइट का फिल्टर लगाओ एंड एवरीथिंग, सो कैसे काम करता है? ब्लू लाइट का क्या इफेक्ट होता है आंखों? डू यू नो व्हाट इज ब्लू लाइट? I just know this thing कि whenever we are using any screen तो जो light emit होती है that is blue light which plays with our hormones. You know what ultraviolet rays, UV rays, yeah. The harmful rays that comes from the sun में से आता है, आपको skin cancer करता है, ये वो, that is UV rays. In other words, that is blue light. Oh, is it? So all the light, even a normal tube light, that emits some amount of UV radiation. Our screens, our laptops, computers, everything emits blue radiations. That is blue light, आप बोलो, या UV light बोलो, they're all the same. Now, see, nothing really protects you from blue light. Not even those amazing, expensive glasses जो ऐसे लगा के दिखाएंगे, देखो blue light emit नहीं हो रही है. No, it doesn't protect you. So, yeah, it may protect you for 10%, 15%, पर उससे ज़्यादा नहीं करेंगे. Okay. And you have to understand that आप sun exposure इतना नहीं है हमारा जितना हमारा screen exposure है. So that is causing premature cataracts, जो हम बोलते हैं. Younger people are developing cataract. Okay. Because आँख में जो normal lens होता है, that absorbs all the blue light. And Okay. it causes cataract. Okay. Yeah. But blue light अगर आप जैसे बोल रहे हो कि it's again another form of UV rays, but UV rays के लिए तो हमारी naturally आँखों को prepare मतलब because it's a natural phenomena, so prepared नहीं होता है. Yeah, it is prepared for a certain limit. We were not functioned to handle so much of blue light. We were functioned to handle the rays coming from the sunlight or the tube light. But we are not exposed, or we are not functioned to for 3 hours, 4 hours, 7 hours, 8 hours of exposure, screen exposure. That is alarming. बट जैसे आपने ये तो चश्मे की बात करी कि चश्मे से ज़्यादा मैक्सिमम 10% फ़र्क पड़ता होगा, बट वॉट अबाउट जो ब्लू लाइट के फंक्शंस होते हैं इन द फोन, इन द स्क्रीन, इन द लैपटॉप की यू स्विच ऑन दैट, सो उससे एक्चुअली फोन्स में है लाइक एज अ there, especially in iPhone, I'll tell you, there are certain filters you see that are there. But all these do not account, or they are not an escape mechanism for using. Of course. It will only help. You have to understand that it will help you only 10%. Nothing more than that. Because eventually you need light. Any form of light is UV light. Makes sense. So that even, the camera light, all your tube lights are UV light. But the thing is, when you use computer, you're using it at a very near distance. The proximity is there. So that is causing a lot of damage to your eyes, to your lens, to your retina, to your lubricating glands of your eyes. बट बहुत लोगों का फिर वही है ना, इट्स लाइक अनअवॉइडेबल बिकॉज देयर वर्क इज सच. तो उस केस में इज देयर एनीथिंग दैट यू सजेस्ट कि व्हाट यू शुड डू? आई हैव रेड अबाउट द 20-20 rule also. Yeah, now 20-20-20 rule is now gone. Now there is another rule. So 20-20 rule, I'll explain. That is like 20 minutes, take a break for 20 seconds and see something that is 20 meters far. So that is 20-20-20. Okay. So now, according to WHO, every 20 minutes, take a break for 2 minutes and see something that is far 20 meters far. But why did they increase the time? So because 20 seconds is not enough for your eyes to relax. जब आप देखो, आप इतना नज़दीक से 20 मिनट काम करो तो आपके आँख के जो मसल है वो एकदम स्पाज़म में चले जाते हैं. Try holding a bucket of water for 20 minutes and पूरा हाथ आपका जम जाएगा. आपके आँख के मसल्स भी जम जाएंगे. So that is why squinting, that is why number आना होता है. You're getting it? Squinting कैसे हो जाता है? But so basically the movement of your eyes because of the muscles. We have around 8-9 muscles in the eyes surrounding, and that's the reason we are having all these movements. Now whenever, one of the reason is excessive near work.
that is maybe a computer. Another is diabetes है, blood pressure है, उसके कारण होता है वो तो अलग ही चीज़. But whenever you do near work for a very extended hours, so those muscles get into spasm, जकड़ जाते हैं, and that causes squinting. That is the reason. Okay. We do not understand these things, but if you start these things at 20, when you are addicted, when you are dependent on your work and your work here, and when you turn 50, that's the time you realize that what damage it has caused. तो अकॉर्डिंग टू यू कब से एक इंसान को और कितना फ्रीक्वेंटली आई चेकअप कराना चाहिए और कौन सी एज से स्टार्ट कर देना चाहिए? So basically, screening should start from birth. Now birth, yeah. All now pediatricians, they do a regular eye checkup as well. Okay. It's a necessity. Number 2 is every 6 months you keep on checking your eyes. For a normal person, for an adult as well. आप अपना नंबर चेक कराओ, आप अपना आँख का प्रेशर चेक कराओ और आप अपना आँख का पर्दा चेक कराओ, विच इज द रेटिना. ये 3 चीज every 6 to 8 months करवाना ही चाहिए. ओके. तो आपके पास ऐसे केसेस आए जिसमें उन्होंने जस्ट नॉर्मल चेकअप करा लिया एंड कुछ ऐसा जो निकल गया एंड देन यू saved them daily, not 1, not 2, not 3, more than 15-20. और मेजर क्या निकलता है उसमें? मेजर तो एक तो वी हैव सीन के डायबिटिक पेशेंट्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी निकलता है. नंबर 2 इज ग्लोकोमा, झामर, एंड देन कम्स कैटरैक्ट. ओके. कैटरैक्ट इज not something that patient will have a complaint कि मेरे को कम दिख रहा है, but it's not any emergency or it is not something that will require prompt treatment. But glaucoma and diabetic retinopathy, जो diabetes के कारण retina में changes होता है, that is only and only seen when a doctor will examine and the patient is unaware because they're silent killers of the eye, silent killer of your vision. ओके. या ओके. तो और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में? अगर मैं तीनों में इनफैक्ट तो आई टॉक अबाउट कैटरैक्ट. कैटरैक्ट जो आँख में हमारा नॉर्मल लेंस होता है, नेचुरल लेंस होता है, यूजुअली वो पारदर्शक होता है. पारदर्शक मीन्स इट इज ट्रांसपेरेंट. ओके. यू कैन सी थ्रू इट. इट्स लाइक अ नॉर्मल ग्लास. हाँ. ठीक है, रूम के उस बाजू क्या है आप देख सकते हो. हाँ. एज यू एज और बिकॉज ऑफ डायबिटीज और आपको आँख में कभी कुछ लगा हो या समथिंग लाइक दैट, it becomes milky, translucent हो जाता है. So you cannot really see what is there. So you see a little hazy, you see yellowish tinted vision that is there. But it's not an emergency, it's a planned surgery. So that is basically cataract. ठीक है. Now comes glaucoma, जिसको हम झामर बोलते हैं. तो आँख में like we have blood pressure in the body, ऐसे आँख में भी एक प्रेशर होता है जिसको हम intraocular pressure बोलते हैं, IOP. When that increases beyond 21, उसका नंबर है 21 mm of Hg, तो वो जो आपकी जो नस होती है which connects the brain, उसको वो सुखा देती है. So your vision decreases and glaucoma is called the silent killer of the vision because patient को पता नहीं चलेगा कि मेरे को कम दिख रहा है. क्यों? बिकॉज उसका पेरिफेरल विजन कम होता है, उसका सेंट्रल विजन इज एब्सोल्युटली फाइन. पर साइड में से अगर गाड़ी है या आप मेरे साइड में बैठे हो तो द पेशेंट वोंट बी एबल टू सी. आई कैन सी बट साइड में से क्या है दे डोंट सी. सो व्हेन द पेशेंट कम्स टू अस तो वो टनल में से आप देख रहे हो ना, ऐसा लगेगा. So that is why. And number 3 is the diabetic retinopathy. It's because of diabetes, whether controlled or uncontrolled. But if you are diabetic more than 5 years, and especially if there is a lot of fluctuation, तो आपके retina में blood आ जाता है, सूजन आ जाती है, so your vision decreases. So these are 3 main things that we see on our daily basis, which patient has no complaint. That it is went for a check and we find this. Oh my God. Okay. अब पता चल रहा है, वो ये था ना, the more information you get, the more you realize कि कितनी ज़रूरत है तुम्हें ध्यान रखने की. बट ऐसा कुछ हुआ है कि ये जो विद टाइम, आई मीन कोविड आया एंड ऑल ऑफ दैट, जितनी भी डिसीजेस बढ़ रही है एंड एवरीथिंग, तो उससे आँखों में द पेशेंस हैज इंक्रीज, द नंबर ऑफ पीपल जिनको चश्मा चढ़ना है वो इंक्रीज हो गया है कंपैरेटिवली? Yeah, I mean,
नॉट जस्ट चश्मे की बात आपने की, वो तो इंक्रीज हो ही गया है, बट समहाउ वी हैव सीन आफ्टर कोविड आँख की जो नस है जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उसके भी इश्यूज बढ़ गए हैं. नाउ इट्स बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, इट इज बिकॉज ऑफ द वायरस, नोबडी नोज, बट वी हैव सीन पीपल हैव lost eyes, like completely एक आँख चली गई है, and there is everything is fine in the eye, and we see कि आँख की नस पूरी सूख गई है. Now our entire body can regenerate, everything including our liver can regenerate, but हमारी जो नसें होती है which connects the brain, they don't regenerate. Okay. Because I am actually having these thoughts. As imagine as ophthalmologists, we see this day and night, and we're scared. इट्स स्कैरी. और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को कितना शॉक होता होगा कि एवरीथिंग इज फाइन, मैं तो बस दिखाने हूँ, and what's happening, I mean. To all those people who took corona for granted, I'm telling you, it's not that great. Yeah, I'm sure उसने ऐसे long term We've not seen the repercussions. We've just begun seeing it. I totally. मेरे को तो सारे versions हुए हैं यार. क्या बात? Literally सारे versions हुए. क्यों? I don't know. I mean, I hope things go that way. Yes. Okay, तो आपने जैसे चश्मे की बात की, I see you are wearing चश्मा. I know. You wear चश्मा. Yeah. तो आपने खुद से, क्योंकि आजकल लोग चश्मे को अवॉइड करने के लिए लेंसेज और लेजिक इसके लिए जाते हैं, so I want to ask you, being an eye doctor, आपने चश्मा क्यों नहीं हटाया? Why didn't you go for LASIK? So, LASIK is a wonderful option, no doubt about it. There are two things. One is your choice, whether you want to get it done or not. And number two is whether you are a fit candidate for LASIK or not. Okay. For me, I love glasses with all fancy cat eye and everything. I love it. I'm fond of glasses. But at some point, I was also of that opinion कि भाई चलो यार LASIK करवा देते हैं. And I got my scans done and I realized, oh my God, what a terrible candidate I am for it. So my corneal thickness, basically, LASIK में हम cornea, we play with the cornea, जिसको हम कीकी बोलते हैं. ठीक है. उससे we play. So your corneal thickness has to be of some optimum level, then only you can undergo the procedure. And somehow my scans were not normal, so I could not undergo LASIK. So I chose to wear all fancy frames. Oh, and okay. Now that is the reason. Yeah, because basically LASIK is a cosmetic procedure. It's not a necessity. It's not something that आपका vision चला जाएगा अगर आपने नहीं करवाया. So why take a risk when you are not a fit candidate? Why take a risk when your scans are not normal, or they're borderline scans? But लोग हैं जो risk लेते हैं. They do, but we don't tell. We tell them that we won't do it. You can take another opinion, you can see, but we don't do it because it's not a necessity. And mostly they don't understand, but there are certain socially there's some stigma related glasses. They desperately want to get it done. Then we suggest them other procedures rather than LASIK. Okay. So, but अगर फिर मैं आपसे पूछूं who is a fit candidate, because it's not a natural process, तो आप बोलोगे कि LASIK कराना, मतलब okay to get LASIK of course, definitely. If all your parameters are normal, आपके सब scans, आपका retina, आपका cornea, आपका number, सब stable है, which is fine, then get it done if you want to get. उसका कोई risk, कोई side effect? Every surgery has a risk. क्या risk होता है? So we've seen के risk in terms of immediate नहीं आता है, but in few years people develop a condition called keratoconus, जिसमें normally हमारी जो कीकी है cornea is a dome shape, but it becomes like a cone. So there is further thinning of the cornea, जिसको ectasia कहो, keratoconus, which we have seen, but that is only 1%. Majority को कुछ नहीं होता है. But वो किसको होता है जो borderline case होते हैं और they get the LASIK done. Some scan must not be normal और वो लोग करवा देते हैं, उनको ये होता है. Okay. तो आप बोल रहे हो, but अगर there are no as in repercussions and you're fit deemed for this, you can go ahead for it. Surely. Okay. But इसका general cost क्या रहता है अगर मैं एक basic जानकारी के लिए LASIK का? Popped a very good question. Okay. No marketing gimmick, nothing. Do not go to places which offer you,
हम आपको लेजिक 5,000 में कर देंगे, 6,000 में कर देंगे. What normal cost basically depends on आपके नंबर कितने हैं. It can start from 15,000 and go up to 1 lakh as well. Okay. But there are places, there are doctors, there are institutes, they'll give him हम 5,000 में आपका कर देंगे. And people go there. We don't realize that we are playing with your eyes. जब आप LASIK करते हो, when you you have to make a cut on your cornea with a blade. So one eye, one blade. वो लोग एक ब्लेड में से 4 सर्जरी करते हैं. तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट कटिंग होता है, तो दे कैन अफोर्ड टू डू इट इन 5,000. सो वी हैव सीन पीपल गो लाइक विंडो शॉपिंग फॉर लेसिक. किसकी कॉस्ट कम है, हम वहाँ जाएंगे. टू नॉट डू दैट. That is so. The cost is very subjective. It will really depend on what your number is. हाँ, अच्छा, totally on the number part. Yeah. But एक average generally almost same होता होगा सब. Same. Which is Between 15 and it can go up to 1 lakh, depending on the number and what procedure you choose. Okay. And are there any advancements? मतलब what are the कुछ है technology wise कि हम Yeah, LASIK there are कैसे करा सकते multiple. So LASIK is a standard procedure. LASIK and PRK. They are standard, most studied, widely used procedures. I think एक customer को भी when it comes to eye बस LASIK ही पता है eye में एक surgery जो होती है. I feel the safest LASIK and PRK. उसके अलावा there is smile and relax and this and that, but they have no added advantage. Okay. All right. We do everything, but when when LASIK and PRK is the safer option, we choose that. But there are multiple options. ICL करके है, PRK है, EpiLASIK, LASIK, you name it and it's there. But they're all different forms of LASIK. So per basic is LASIK and PRK. PRK is like fine. Yeah. But do you see, I'm just asking, आप ऐसे देखते हो any malpractices are happening when it comes to eye? If you want to talk about it. No, I would like to address this, yes. Not only in LASIK. Okay. In cataract as well. Okay. Okay. आप आए नहीं, 50 साल के आप हो नहीं, आओ आपको मोतिया है कर लो. It's like that. So one time I hope you all remember कि knee replacement के लिए ऐसा था कि भाई किसी को भी knee replacement करवा देते थे. अभी आई में ऐसा हो रहा है. We have seen daily we have a patient of 200-250. उसमें से 30 new patient कहीं और से आते हैं. They have no cataract and they have been advised cataract surgery. क्योंकि patient कहीं और ना चला जाए. So lot of malpractice is there. Lot of malpractice. It's there in all field. But somehow in ophthalmology and joint, it's very pronounced. Because I think लोगों को पता है ना कि this is situation जो it will occur some later. वो लोग बोलते ही ऐसे कि भाई आपका मोतिया पक गया है, आप कर लो. अभी लेसिक की बात करो तो मैंने आपको बोला जो बॉर्डर लाइन केस होता है जिनको अभी नहीं पता चलेगा, बेबी आफ्टर 5, 6, 7 years they will see the repercussions of it. You know, वो बॉर्डर लाइन केस भी कर लेंगे सब. So that needs to stop. So in our institute, when I was to join my father in 2019, my father told me one thing, that you're most welcome in my hospital, but there are 2 conditions. If you're okay with that, then only I will let you in. Okay. I'm like, what is this? Yaar? I'm his daughter. What are you saying? I said that ethical and moral practice will work here. Cataract नहीं है तो नहीं है. ये नहीं है तो नहीं है. And secondly, you treat your patient and your staff as your family, you will never go wrong. Wow. So these were his 2 conditions, and every doctor or any staff who comes here has to go through this. Then only they have place in this institute. Oh wow. So that is how I feel that when I saw that perspective, I realized the amount of malpractice that is happening outside. So yeah, that's why I think you're one of the best hospitals, I mean, when it comes to eyes. But आप फिर इसमें कुछ suggestion देना चाहोगी to a patient, like they know कि this is happening, but उन्हें कैसे choose करना चाहिए फिर एक hospital when it comes to any surgery? See, any surgery, I'll tell you, except for injury, no surgery is an emergency. In eye. In eye. Okay.
very few 1 to 2% surgeries are an emergency surgery. Whenever you have a complaint कि मेरे को कम दिख रहा है या मेरे को चश्मे से कम दिख रहा है, नया नंबर लो नहीं होता है, then that is the right time to get a surgery done. Okay. Just because I tell you आपको cataract है doesn't mean आप कोई आपका पक गया है cataract. ऐसे नहीं पकता है भाई cataract. It takes time. And even, we've seen people get lasers done, all sort of eye lasers. They start any glaucoma medication, this and that. There is no hurry. Nothing is going to change overnight. But whenever you feel कि आपको चश्मे से कम दिख रहा है or you have any symptoms, or when the doctor says कि let's wait, then wait. Don't be in a hurry because one person told you कि आपको कैटरैक्ट है और करवाना चाहिए. So usually we see malpractice mostly in cataracts. Okay. In cataracts. Yes. Okay. कि भाई आपको पक गया करा दो. और पेशेंट डर के एज अ पेशेंट, एज अ लेमैन सब डर जाते हैं. हमें हमारी फील्ड के बारे में पता है. आपको अगर रिगार्डिंग इंटरव्यूज आपको कोई और कुछ बोलेगा, हाँ तो ये आता ही है. एक थॉट आ जाए दिमाग में तो आता ही है. तो कैटरैक्ट की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो कैटरैक्ट में फिर क्या मेन सिम्टम्स होते हैं कि एक इंसान को जैसे आपने बोला कि ब्लरी हो जाता है और सो यही सेम सिम्टम्स कैटरैक्ट. सो कैटरैक्ट में 2 symptoms होते हैं. वन इज डिक्रीज्ड विजन, हाँ, एंड सेकंड इज ग्लेयरिंग. रात को उनको ग्लेयर लगती है, मतलब वो लाइट आती है तो फैलती है लाइट. ओके. That are the 2 symptoms, but usually glaring is a sign of early cataract. So you should wait in those cases. Avoid driving at night, but wait. एक बार आपका विजन कम होने लगता है या चश्मे से भी नहीं सुधरता है, that is the time you should get it operated. अच्छा. Till then, try changing your glasses. Mostly that's fine, but whenever the cataract is in operable stage, get it operated. कितने लोगों को चांसेस है कैटरैक्ट होने का बट दुनिया में? Mostly all of us. All of us. It's like an aging process. आपके जैसे बाल सफेद होते हैं with age, as you get wrinkles with age. It's the same thing with your cataract. तो मतलब लाइफ में सबको एक ना एक बार ऑपरेशन कराना पड़ेगा. Mostly, but there are people. Now, in this, genetics plays a very good role. If you are prone to get cataract in early age, you will. But मेरे दादा दादी किसी को cataract बहुत late 90s, 100s में हुआ है, 80s में हुआ है. They're okay. Like, why do early age कौन सी है इसमें? So we've seen young people like 30s also get cataract, but that is purely genetic, or maybe childhood trauma हुआ हो, कुछ आँख में लगा हो उसके कारण. तो ग्लूकोमा की भी आपने बात करी तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर थिंग जो आप बोल रहे हो कि इट्स हैपनिंग. तो आई वांट टू एक बार अंडरस्टैंड इन डिटेल कि अब लोगों को हो रहा है तो इफ समबडी लिसन्स टू दिस उन्हें पता हो कि क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या करना है उन्हें व्हेन इट हैपेंस. तो इफ यू स्टार्ट की क्या मेजर सिम्टम्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू ग्लूकोमा? Glaucoma is symptomless in most of the cases. It is, as I said again, silent killer of the patient. हाँ. So patient usually doesn't know कि उसको glaucoma है. हाँ. अगर प्रेशर उनका 50-60 होता है तो उनको हेडेक, आई पेन, विजन लॉस होता है. ठीक है. और अभी 30s 28 होता है तो दे विल नॉट रियलाइज. नो पेन, नथिंग. वो तो हम आप इधर आओगे, हम प्रेशर लेंगे और हमें पता चलेगा कि भाई you have high pressure and you are susceptible to develop glaucoma. और इसके worst effect क्या है अगर टाइम निकल जाए and people It is a permanent, irreversible vision loss. So what is gone. What you have, let's save that. तो eyes में generally you are saying कि major of the things are irreversible. Yes, right? major. Like, no, for those that have a cure, like cataract has a cure, like even glaucoma has a cure. If it's detected early, on time, you know कि भाई दादा को था, मम्मी को था या किसी को था, then you are at a higher risk to develop. हाँ. Second is all kind of avoidable blindness. Avoidable blindness मतलब आँख में लगना, ये सब they're all majorly curable. But there are certain things that not only in your eye, even in your body, एक stage के बाद detect होता है तो वो curable नहीं रहता. हाँ, makes sense. मतलब I am just understanding, I'm feeling कि कितना important है आई चेकअप कराना में जो लोग, and I think with the time pollution, dust जो बढ़ता जा रहा है कितना important होगा. It's like we've seen, because we've talked about dust and pollution,
lot of allergies are coming out in form of मेरे को पानी निकलता रहता है, जलन निकलती होती है, आँख सूज जाती है. So these environmental factors are playing a very important role in form of damage to your eyes, causing a lot of damage to your eyes. Okay. तो जैसे हम इनफैक्ट अगर आपने इसकी बात करी है डस्ट वगैरह की, तो हम चश्मे लेते हैं. फर्स्ट वन इज फॉर सनलाइट एंड सेकेंड इज फॉर डस्ट, जो मेजर, नॉट द नंबर वाला, the sunglasses that I'm talking about. So do we have to think about anything technical part when we are buying sunglasses? Just take a normal UV protective glasses. No blue filter, no green filter, no filters, just UV protective glasses. But wear it. But wear it. Wear it. It saves you. You go out in the sunlight, wear it. It's like, you know, you take so much of care for your skin. You keep on applying all the sunscreen and everything. Just wear the simple sunglasses. You know, that will protect it. At least जो 20-30% protect करने का. Yeah. So that does help. So It people does. should, It because does. अभी when you talk about the weathers, I mean, अब जो you talk about the global warming, I think summers are getting extreme. Oh, yeah. So people need to use that. And also sunglasses will help you from any kind of injury. You know, we've seen of people course. को आँख में मस्सी चली जाती है, वो हेमरी कहते हैं, iron particle चला जाता है. We keep on saying, but if you have glasses, it will hit the glasses, not your eyes. So, you know, it has a protective. Yeah. But आपने जैसे इसमें पानी की बात करी, you said कि कुछ भी हो तो you should, water is the best solution, you said that. But what मैंने जिस तरह सोच के what I read is water ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि हर चीज़ का होता है आँखों में पानी डाल लो, तो आँखों में डायरेक्ट पानी डालना also takes you to dryness at certain point. आँख में आप कैसे पानी डालते हो is important. Okay. लोग जोर से डालते हैं. हाँ. That is not good. लोग वो आई कप्स आते हैं, वो ऐसे रख के डालते हैं. That is not good. Just धीरे से लोग गर्म पानी डालते हैं. That's not good. Normal running tap water हल्के हाथों से लगाओ. So it's not the water causing damage. It's the way you use that water that's causing damage. इससे मुझे याद है, actually there are a lot of myths that I went through when it comes to I asked me about the myths. Oh my god, it's very googled myths. Yeah, so I mean गौमूत्र आँखों में डालते हैं, गाजर घिस के उसका पानी आँखों में डालते हैं, even दूध. हाँ, so honey, I mean are they even, मतलब बेसिक की ग्रीन ग्रास पे चलो, उसमें तो तुम्हारी आँखें उससे ठीक होंगी. I mean, do they work? I'll give you many more if you want. Please tell me, आपने biggest myths क्या देखे हैं जो आपके पेशेंट्स में आए हैं? हर्बल मिथ सुना है आपने? नहीं, I haven't. नीम का धुआं करो. फिर वो जो बर्न्ट होता है ना, उसका पेस्ट बनाओ and rub it around your eyes and like kajal. Imagine people have lost eye. आँख में पानी और दवाई के अलावा कुछ नहीं जाना चाहिए. ना दूध, ना शहद, ना गौमूत्र, ना एनी हर्बल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक मेडिकेशन जो वो लोग वर्ड यूज करते हैं. देयर इज नथिंग लाइक आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिकेशन. मेडिकेशन इज ओनली एलोपैथी जो आपको सर्टिफाइड डॉक्टर देते हैं. ये सारी चीजें लेके लोग रोज आते हैं. Have you seen people, especially if you go to rural places, छोटे बच्चे when they're born, वो लोग भर के आँख काली कर देते, वो काजल लगा. क्या है? Why? Children lose their eyesight because of it. Got it. And also पहले जो प्योरिटी में चीजें मिलती थी अभी वो नहीं मिलती. मेजर रीजन वही है जो बढ़ने का है. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन. प्योरिटी इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑल्सो, द पोल्यूशन एंड एवरीथिंग, एंड द थिंग्स व्हाटएवर वी आर यूजिंग. Everything like use your kajal that are chemicals. Use anything. Even milk is not in the cleanest and purest form. That Tetra Pak बोलो या कुछ भी बोलो. What is mixed? Hormonal cows, they're treated hormonally and the milk is coming. Yeah. So these are the things, I mean, we do not know where things are sourced from. हाँ, true. पर natural करो, but हाँ जितना हो सकता है stay avoid, because I think the best thing is water. Nothing beats that. Okay. And what about जो ऐसे लोग बहुत आँख मलते रहते हैं and all of that, so उसका I mean long term में
I'm not the right person to speak about Because it you're because I do that all the time. Oh, that is really bad, Okay. not the right person. But Yeah, that's wrong. but you're also doing wrong, you're accepting that, but how is it affecting you? So yeah, basically, I've touched this table. हाँ. This table is touched by 100 people. किसके germs यहाँ लगेंगे? We don't know. और बीच में तो आपको पता है वो red eye पूरी निकल गई थी. Yeah. Conjunctivitis. हाँ. That spreads because we keep on touching our eyes. It doesn't spread. देखने से नहीं spread होता है. It Oh, spreads does by it? touch. No, yeah. Even I thought हाँ, सब काले चश्मे पहन के और डर लग जाता है कि it will. So even हाँ, but I think that makes sense कि whosoever has that, so Yeah. because they touch their eyes and then they touch other objects, so then there's a chance that it might infect you. But आँखों से देखने का देखने से and okay. And second, I feel especially in children in developing age, there are जब हम नंबर निकालते हैं उसमें एक सिलेंडर नंबर निकलता है. एक जो प्लेन नंबर होता है और एक सिलेंडर नंबर होता है. सिलेंडर नंबर इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ योर कॉर्निया. किकी जो बोलते हैं उसके शेप के कारण से होता है. नाउ children who rub their eyes, they have itching or they have some habit of doing it, they keep on rubbing their eyes, their cylinder number increases. So especially in kids, especially I tell these mothers that don't give them this screen because they try to focus so much and they start rubbing their eyes. Yeah. Also cylinder number आते हैं. And eventually चश्मा जल्दी लगता है. चश्मा नहीं और it is thinning of your cornea. It will require surgical intervention when the cylinder number is beyond 3, 4, 5. So these are two things के infection and secondly आपको cylinder number आता है. ये दो कारण है. You must avoid doing it. Okay. And अगर आपको करना है तो थोड़ा हल्के हाथों से करो, हाथ धो के करो. Okay. But don't like squeeze it out. Itching है तो हल्के से. The point is how you're dealing it. Consider it कि बहुत it's a very delicate part of Yeah, your body. exactly. Okay. And what about blinking? So I've heard कि जो लोग अगर ज़्यादा blink करते हैं so that means उनके चश्मा है, their eyes are weak. Is that true? No, blinking, excessive blinking, basically there are 3 reasons. One is you have dryness in your eyes. Okay. So your eye tries to blink a little more so that ज़्यादा आपका वो production हो lubrication का. Number 2 कि चश्मा है and they are not wearing glasses या number change हो गए. And number 3 is multivitamin deficiency in your body. So your eye tries to twitch, it tries to blink more because it does not get the proper nutrition. There are some vitamin deficiency in your body. Oh, okay. So these are the 3 main causes of excessive blinking. ओके. तो आपने जैसे बोला कि बहुत लोग हैं जो चश्मा है और वो नहीं पहनते, तो पर अगर जिनके चश्मे का नंबर है और वो चश्मा नहीं पहनते, हाउ डज दैट इम्पैक्ट? So basically, I'll tell you, in kids, if you don't give them the glasses that they need, their eyes will become lazy. It will not function up to the optimal level. ओके. तो धीरे धीरे उनकी आई वीक हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्लायोपिया. इन लेमन लैंग्वेज उसको बोलेंगे लेजी आई सिंड्रोम. सो आई इवेंचुअली बिकम्स वीकर एंड वीकर. तो जितना दिखना चाहिए वो नहीं होता. एंड बाय फिर when they grow with any amount of glasses or any surgery, the vision will not increase. Okay. That is number 1. Number 2, आपको एक नंबर है या कम नंबर है, आप नहीं पहनते हैं, तो you will start developing headache. आप शाम होगी तो you'll feel like the headache is there, my eyes are straining. So you develop symptoms like headache, eye pain, eye strain, आँख थक जाती है. These are 2 things that you will develop if you do not wear glasses. Because you have number. Your eye needs that much of power. पर आप उसको दे नहीं रहे. हाँ, so strain पड़ रहा है in short. So मतलब that is true जो बोलते हैं कि headache हो रहा है तो people are like आप check करा ले अपना. Because headache, I feel the basic thing is कि चश्मे के कारण होता है. Get it checked. It is simplest. उससे नहीं होता है तो आप further investigate करो. But most of the time, this Knowing is what the kind of environment we are living in, every second person has glasses.
So that is way common than any other migraine or brain में issue या ऐसा कुछ. Yeah, that's true. मतलब ये मेरे को वही आपसे बात कर रही हूँ ना, तो ये लग रहा है कि कितनी कॉमन चीज हो गई है कि आईज आर नॉट वेल और स्टिल लोग उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे. आई मीन सच एन आयरनी. सो मैं अगर ये चीज आपसे पूछूं, पहले तो आप मुझे बताओ कि कितना नंबर ऑफ आवर्स है जो हमको यूज करना चाहिए एक बच्चे के लिए और एक एडल्ट के लिए, प्रॉब्ली अबव 50. तो व्हाट इज द एक minimum screen time that we should use? So in kids up to the age of 2 years, no screen time. Okay. No screen time. From 2 to 8 years, only and only 10 minutes allowed, वो भी दूर रख के, not your mobile. When I talk about screen time, I am not referring to mobile in children. I'm referring to television. I'm referring to laptops which is kept at least 3 meters away. Then when the child is by 9 to 15 के बीच, 20 minutes to 30 minutes is fine. And then once the child is 15 or above, you can expose the child for 40 minutes. That is it. This is recommended. Okay. ठीक है. Okay. But not the mobile. I'm talking about again screens that are larger और वो distance पे है. And ideally for any adult. Now see, for adults, are certain jobs are dependent on them. Now we cannot really tell them don't use it. But ideally more than 2 hours will have कुछ ना कुछ side effect on your eyes. Especially there is a disease called computer vision syndrome. WHO has framed. CVS, computer vision syndrome. And उसमें patient को burning होता है, headache होता है, शाम होती है तो eye का थकान होती है. They develop decreased vision, blurry vision, and most importantly dry eyes. And this becomes irreversible. मतलब ये permanent element हो जाता है. तो आँख का नंबर है कि जितना एक बार आ गया उसके बाद कम नहीं होता है कभी? No. नहीं होता है. Oh, even when you are using the भाई मैं कोई एक्सरसाइज करूंगी आँख की और मेरा नंबर कम हो जाएगा, मैं चश्मा पहनूंगी और मेरा नंबर चला जाएगा. इट्स अ मिथ. एक बार आ गया तो एज आई टोल्ड यू कि आपके आँख के नंबर आपके आँख की लेंथ, आँख पीछे से कितनी बड़ी है उस पे डिपेंड होता है. तो वो तो नहीं चेंज होगा. तो इट्स लाइक जो है बस उसी को तो है, यू कैन जस्ट सेव इट. तो पर मैं एक्चुअली above age, like for parents, like above 60, above 50, because they are continuously on phone and they are at a much developed time. हाँ, exactly. तो उनके लिए तो और कम screen time फिर होना चाहिए, right? So yes, basically in adult patient, screen in as you age, your body degenerates. Your wear and tear होती है body में. So when you age, आपकी आँख की जो ग्रंथियाँ होती है, जो glands बोलते हैं, they also age. ठीक है, तो उसकी भी हेल्थ कम होती है. व्हेन यू एक्सपोज योर सेल्फ टू द स्क्रीन, तो एक तो आपका जो रेटिना होता है उसमें धब्बे पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं. इट इज कॉल्ड एज रिलेटेड डिजेनरेशन. एंड व्हेन यू यूज एक्सेसिव मोबाइल, इट विल एनहांस इट. एंड ऑल्सो विथ एज यू विल सी के आपकी जो आई का टीयर होता है, इट बिकम्स थिनर एंड लेस. एंड इट डज नॉट स्टे इन द आई. आप देखोगे व्हेन यू सी ओल्ड पीपल, दे कीप ऑन कंप्लेनिंग कि भाई मेरे को वाटरिंग होती है, बिकॉज वो आई के अंदर रहता नहीं है, वो बाहर ही निकल जाता है. सो व्हेन दे यूज द मोबाइल मोर, ज़्यादा टीयरिंग होगा, ज़्यादा वाटरिंग होगा. That is the thing. So these are two things that an aged person should take care of. I don't want to say it here, but dad से मार खाऊंगी मैं, but dad के लिए specific ये question उठाया मैंने. Because I mean most of the dads that I mean not mine, but बहुत लोग हैं जो phone पे और but yeah, you can't even blame them, honestly. I know, but I think it's important. And when I don't retire, I mean, the first time is to play Candy Crush. Candy Crush. Exactly. यार बच्चों के लिए खेलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स और सेम. तुम्हारे घर पे भी सेम है, इन शॉर्ट इसका मतलब. I think it's oh my god, Candy Crush craze.
Candy Crush saga. My mom is like, वो पता नहीं कौन से 10,000 लेवल पे है वो. No, my mom, yeah, and बाकियों का जो उनके फ्रेंड्स है तो there's a competition that's happening. like क्या चल रहा है? Candy Crush. So yeah, so It's a cult favorite. yeah, I know it's a whole cult now. Exactly. हमारा नहीं उनका. हाँ, exactly. So that's why I wanted to pick this question up specifically for above 50. I've seen like middle-aged people like us, we don't play games. Ah, true. Younger people will play PUBG, older people will play Candy Crush. We are all on laptops doing what not. True. हमारा फिर ये हो जाता है काम में इतना हो चुका है कि बस अब छोड़ो क्या कैंडी जितना हो फोन ना रहे आसपास. I think that's a thing that my agenda in life is very simple. So Monday to Saturday work, Sunday eat, sleep. nice. अरे यार बट वही है ना आदतें. अरे यार I sleep at 9:30. Ask me. I stay at 9:30. Wow. I don't go for late nights. Oh, sorry. Wow. नहीं यार बट आई थिंक ये दैट्स व्हाई एक प्रोफेशनल बोलता है ना फिर भी 2% फर्क तो पड़े यार. My childhood ना my father was a chiller but my mom was a big Hitler. 6 बजे उठो. He'll be watching, you know that, right? He and she both will be watching. Won't be going. I will send possibly. But okay, go ahead. I want to know. Like 6 बजे उठो, 9 बजे go to bed, no matter what. And for till now, from my birth till now, we don't have TV in our home. Oh wow. My entire childhood has gone without television. Oh. I used to go to Kathak classes. I used to go for tabla classes. I would go for my piano. No means no television. Nobody would see. Not my brother, not me. No one. Oh wow. और अब No. सॉर्टेड है. बट अगर मैं इनकी जैसे चश्मे की भी अगर आपसे बात करूँ, मेरे को ये चीज़ पूछनी है कि बहुत बार जो लोगों ने लेसिक आपने जैसे बात करी तो लेसिक में भी होता है कि लेसिक करा लिया 5-6 साल लेसिक चला और उसके बाद वापस चश्मा आ गया. इज दैट ट्रू? हो सकता है. वाई? आप लेसिक करा रहे हो अभी जिस पे आपका नंबर लेट्स अज्यूम 3 है, -3 है, तो लेसिक आपका -3 नंबर निकाल देगा, वो 0 कर लेगा. बट आपका अगर नंबर बढ़ना है, अगर आपने लेसिक नहीं करा है फॉर एग्जाम्पल, आज आपका 3 है, 1 साल के बाद वो बढ़ के 3.5 हुआ, तो आपका वो 0.5 तो बढ़ा ही ना. हाँ. आपने लेसिक नहीं करवाया है पर अभी आपने लेसिक करवा दिया, पर जो बढ़ना है वो तो बढ़ेगा ही. दैट यू कैन नॉट स्टॉप. हाँ, वो आएगा. वो नंबर वापस नहीं आते हैं. वो जो नंबर जो बढ़ने होते वो तो बढ़ेंगे ही. दैट यू कैन नॉट स्टॉप. यू कैन डू लेसिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विद अ पर्टिकुलर नंबर. उसका 0 होगा. बट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आपका नंबर फ्यूचर में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. तो एक बार करा लिया तो वापस करा सकते हैं फिर? नहीं. नो. अच्छा, दैट्स अ वन टाइप. सो यू हैव टू रिमेम्बर, नंबर वापस आया इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन. अगर आपने लेसिक नहीं कराया होता वो नंबर बढ़ता हो रहता. रिवेटिंग वो 3 का 3.5, 4, 5 होता रहता. बट इट्स जस्ट कि आपने लेसिक करवाया है. हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर? राइट. सो प्रॉब्ली यू कैन मेंटेन बट बढ़ने के चांसेस पूरे रहते हैं. ओके. सो इवन बट जैसे हम चश्मे खरीदते हैं तो आई मीन जब चश्मे लेते हैं हम तो चश्मे लेने का लाइक द डिज़ाइन, द फ्रेम्स एंड एवरीथिंग, तो फ्रेम भी हमें शुड वी आस्क द डॉक्टर कि कौन सा फ्रेम लेना चाहिए एंड उसका कुछ इफेक्ट होता है? सो फ्रेम एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट. We've seen especially in older patients who wear bifocal या progressive glass, जिसमें 2 नज़दीक के नंबर एक साथ होते हैं. हाँ. And they choose a very big frame, you know, like oversized frame. ना उसमें ऐसा होता है कि कोई भी चश्मा का जो फ्रेम है उसमें जो ग्लास है उसमें लोअर साइड जो होता है उसमें नज़दीक का नंबर होता है और अपर साइड जो होती है उसमें दूर का नंबर है. Right. Now, when you select an oversized frame or a frame that is not well fitted on your face, तो वो सिंक्रनी नहीं रहती है. तो आपको नीचे नज़दीक का देखने के लिए इधर फ्रेम ऊपर करनी पड़ती है या आपको एक्सट्रीमली नीचे देखना पड़ता है. Right. So choosing the right frame according to your face is very important. And you have to say कि भाई देखो यार मेरे को नज़दीक का काम ज़्यादा है तो don't try to choose a bigger frame. Try to choose a smaller frame. आपको ऐसा है कि भाई मेरा दूर का काम ज़्यादा है तो choose the accordingly. Or the best option is कि आप अलग अलग बनाओ. नज़दीक का अलग. It's better, you're saying. Yeah. It's better.
बट फ्रेम्स तुम्हारी कंफर्ट पे स्टाइल से पहले डिपेंडिंग ऑन द वर्क हाँ you choose a frame. मेक सेंस और कितने टाइम में हमें फ्रेम्स चेंज करने चाहिए? So frame you can keep the same. You have to keep on changing the glasses. exactly That is because when the glass को बहुत scratches हो जाते हैं, you know, you will decrease your vision. because of that. Yeah, because your eye will start straining. जो scratches होते हैं ना, उसमें से वो जो light आती है वो फैल जाएगी. So every 6 to 7 months, if your glasses are fine, scratch free है तो ठीक है. But every yearly I feel change the glass. Just change it. Literally I'm very right now very honest. मैं बहुत चीजें जो process कर रही हूँ इस समय, मतलब because it's like really scary honestly. Yeah, I'll tell you, it's really not scary. It's just that we've not thought about eyes so much. That is scary कि हम सोचते नहीं है. And मेरे चश्मा नहीं है पर मेरे घर में लोगों के चश्मा है. Now I'm just thinking कि किसके उस पर scratch है. And I think it's really difficult to process. This lecture couple of months ago, and I just started by asking everyone one question. Last 6 months में किसने आई चेकअप करवाया? There were about 500 people sitting. Only 3 people ने हाथ ऊपर किया. चलो मैंने कहा लास्ट 1 year में कितने? तो 100 जितने किए. बाकी 400 people या 300 people ने 4 साल 3 साल में चेकअप ही नहीं करवाया. It's like that. So it's like you're neglecting. पेट तो सबका ठीक होना चाहिए. वो बिगड़ा तो दिखा दो, गला बिगड़ा तो दिखा दो, सर्दी हुई दिखा दो. बट आई बस आई ड्रॉप्स डाल लो. आई ड्रॉप वो क्या फार्मेसी में जो मिले वो डाल दो. स्टेरॉइड होता है तो एकदम से फट से अच्छा हो जाता है, पर उसका जो रिपरकशन है वो आपको पता नहीं है. स्टेरॉइड तो ऑफ कोर्स इट्स like that. So you know, these are the only things that I feel if we take small step every 6 months, go and show your doctor. Whether you have any complaint or not, just go and show. You will avoid 95% of the disease in your eyes. ऐसे चांसेस हैं कि कोई इंसान बिना चश्मे के लाइफ टाइम रहे? होता है ऐसा? होता है. And when we see their vision, उनको इतना भी नहीं दिखता है. 2 मीटर 3 मीटर से ज्यादा उनको दिखता नहीं है. That will not change then. वो विजन उतना ही रहेगा. आप फिर कुछ भी करवा लो, दुनिया में कोई भी कोने पे जाओ, उसकी ट्रीटमेंट नहीं है. Your eye has said कि भाई बस मैं इतना ही देखूंगा और इतना ही मैं मेरे सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं. Okay. Especially in rural area, I'll tell you, because you know they have a thing कि भाई लड़की को चश्मे नहीं होने चाहिए. Is it still a taboo? It is. Most of the patients that we get in LASIK are girls. Oh my God. शादी नहीं हो रही. And imagine, I'm talking about rural. No, I'm talking about Ahmedabad city. I'm talking about urban Ahmedabad, जिसमें अभी भी there is this thing कि लड़की को चश्मे नहीं होने चाहिए. लड़के को हो तो चले जाए. It's sad, but it's the reality. Oh my God. Yeah. Right. Oh my God. Okay. Yeah. What about lenses? Eye versus lenses. Lot of people prefer मैं चश्मे नहीं लगाने, मैं दिन रोज lenses लगा के जाऊंगा. पहन सकते हो. There are daily wear lenses, there are monthly lenses, but only one thing: keep them clean. That is it. There are good options. Like daily wear or monthly is also fine. Both are fine. The only thing is कि daily में एक है यार, पहन के फेंक दो. Monthly में, if you are a lazy person, if you don't take care of your lenses, and if you know you have to put it in a solution, you have to clean it. If you're not going to do that, it will grow bacteria, fungus, virus, and that will cause infection in your eye. And I'll tell you, treating infection caused by contact lenses is very, very painful, very, very unpredictable, and उसके results अच्छे नहीं होते. So if you're wearing monthly lenses, make sure you are proactive in cleaning it. Infections के इस केस में symptoms क्या होते हैं? क्या होता है? Redness, decreased vision, extreme pain, watering, आँख के आजू बाजू सूजन आ जाना, and treatment goes on for months.
Oh my God. It's not कि भाई मैं 3-4 दिन ड्रॉप डाल दूंगी and I'll be fine. I'm not talking about 1 month. I'm talking about months. So contact lens infections are the most trickiest to treat and most difficult to treat, and they're most painful also. और कितने लोग आते हैं इसमें परसेंटेज? बहुत आते हैं. Why? Because मैंने 2 दिन पहले क्लीन किया था, फिर मैंने वही सोल्यूशन में डाल दिया था. I wore the contact lens, रात को मैं पहन के सो गई. It's not something. When you wear the contact lens on your eye, आप उसकी ऑक्सीजन, आँख में ऑक्सीजन नहीं जाता है. So ideally 8 hours के बाद उसको निकाल देना चाहिए. So that your eye can breathe. आपकी सांस बंद कर दूँ 30 seconds में you will start doing that. The same thing. So when you keep the lens and you don't remove it, आप रात को पहन के सो जाते हैं, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो imagine क्या होगा. Infection. True. And in fact पर ऐसा बहुत लोगों की ये भी होता है ना कि आई में लेंस सेट ही नहीं होता है. हाँ. और स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स शादियों में फिर मुझे चश्मा नहीं पहनना है, मुझे लेंस लगाना है, बट वो सेट नहीं होता है बिकॉज आई डोंट नो व्हाट्स द टेक्निकल रीजन, बट वो हार्ड निकल जाता है बार बार. सो व्हाई डज दैट हैपन? So this usually is a complaint जिसमें सिलेंडर नंबर ज़्यादा होता है, जिसको टोरिक कहते हैं हम. अच्छा. सिलेंडर जिसका नंबर ज़्यादा होता है बिकॉज द शेप ऑफ योर कॉर्निया, द कीकी इज नॉट लाइक अ डोम, इट्स लाइक अ कोन, सो इट डजंट सेट. एंड नंबर 2 जिसको वो प्लस में नंबर ज़्यादा होते हैं, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उसको भी सेट नहीं होता क्योंकि उसका जो कॉर्निया वो एकदम फ्लैट होता है. So these are not the right candidates for contact lens. तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. बट sad. Why? Not everything has a solution. Not that. That's my personal question. I'm one of them. Yeah, मतलब मेरे चश्मे ही, but I wanted to use colored lenses in my sister's wedding. And मतलब 2 घंटे में Colored lenses? Yeah. Colored lenses and lenses both I'm talking about. I mean, colored lenses is the worst thing you can do. But at times तो सबका मन करता है. छोड़ो, अभी at times भी है तो ठीक है. मतलब of course the lens. I see people having craze for blue eyes, you know. Yeah, मतलब not blue but color like people prefer at times in occasions and specifically like weddings and such. ठीक है. Though, but it doesn't fit. But it doesn't fit now, so you can't do anything about anything. You're not a fit candidate for that. You're giving me so many emotions in this podcast. Yeah, sad, happy. I mean, what's happening? Okay, cool. Okay, I think we'll work on something then. These are best. Be happy with what you have. Yeah. Yeah. Be blessed with what you have. हाँ, चश्मे नहीं है. At least that's the blessing for now as. Yes. So एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को जो आपसे पूछना था, हमने क्योंकि डायबिटीज की बात करी थी, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, तो आई रियली वांट टू उसमें एटलीस्ट थोड़ा डिटेल में मेरे को बात करनी है. One must address this. Exactly. तो डायबिटीज क्योंकि आजकल इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसीज एंड एज यू स्पोक अबाउट कि आई थिंक ग्लूकोमा इज द साइलेंट किलर, सो डायबिटीज इज अगेन वन सच साइलेंट किलर डिसीज फॉर एवरीवन. तो डायबिटीज से जैसे आपने रेटिनोपैथी की बात करी है, तो हाउ डज एक इंसान को कितने टाइम अपना ब्लड शुगर हैंडल करना चाहिए, या क्या सिम्टम्स आते हैं आँख पे कि उन्हें पता चलता है कि यू नो दिस इज डायबिटीज का इफेक्ट? First tell me, before I told you about diabetic retinopathy, आपको क्या था डायबिटीज क्या कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है? आई न्यू दिस पार्ट के धीरे धीरे सारे उस पे आता है इफेक्ट, बट हाँ आई का थोड़ा कम था. हार्ट और धीरे धीरे हार्ट और किडनी को किडनी और हार्ट पे मेन आता है. यार डायबिटिक अफेक्ट्स 3 organs mainly, योर किडनी, योर हार्ट एंड योर आई. आई मतलब आपका रेटिना. अब किडनी और हार्ट आप देख नहीं सकते बिकॉज दे आर इनसाइड. रेटिना इज द ओनली ऑर्गन दैट यू कैन सी. Okay. So diabetes mainly first affects your retina. Okay. That we do not know. Okay. So whenever you are diabetic, there are 2-3 things you must remember. If you are diabetic more than 5 years, the risk factor of developing diabetic retinopathy, मतलब डायबिटीज की असर आँख पे जो आती है वो ऑलमोस्ट 20 to 30% होती है. अगर आप डायबिटीज 10 साल से ज्यादा है तो 50% चांस है कि आपको ये होगा. अगर आपको डायबिटीज 15 साल से ज्यादा है
तो 80% चांस है कि आपको होगा. Now that is one thing. Another thing is control of diabetes. लोग ऐसा बोलते हैं यार मेरे तो डायबिटीज कंट्रोल में है. तो डायबिटीज कंट्रोल में होना मतलब HbA1c भी देखो आप. आप वो रैंडम करो, PPBS करते हो या फास्टिंग करते हो, उसको मत देखोगे. अब HbA1c भी देखो. एंड नंबर 3 इज फ्लक्चुएशन. आज नॉर्मल, कल ज्यादा, परसों नॉर्मल, फिर वापस ज्यादा. Fluctuation in your blood sugar level is more harmful than constantly high renic. ठीक है, your body goes in shock. कि यार एक दिन ऊपर है, एक दिन नीचे, एक दिन इंसुलिन बढ़ा, एक दिन ये है. It's more harmful. So duration of diabetes, control of diabetes, and fluctuation in your sugar level. These 3 things account to the severity और कितना आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस है. बट आपने उसमें से बोला कि रेटिना पे, सो इज इट विजिबल, दिखता? या यू कैन सी योर रेटिना. आई कैन सी योर रेटिना. उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे वी सी योर रेटिना. जैसे शरीर का MRI होता है, वैसे वी हैव अ मशीन. आँख का पर्दा जो होता है रेटिना, उसका MRI करता है. इसको हम OCT कहते हैं. Then you see. We see it by a naked eye through our machines, and then we do an MRI of your eye, which is called the OCT. उस पे हम देखते हैं कि कितने लेवल तक डैमेज है. So basically when I say कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उसका मतलब जो आपका रेटिना होता है उस पे ब्लड के स्पॉट्स आ जाते हैं. ठीक है, क्योंकि जो आपकी आई की वेसल्स होती है, नलियाँ होती है, वो ब्लड ऊज आउट करने लगती है. सो ब्लड के स्पॉट्स आते हैं. चलो वो तो ठीक है, वहाँ तक आपका विजन अच्छा रह भी सकता है. पर एक बार आँख में सूजन आती है, पर्दे पे सूजन आ जाती है, जिसको हम डायबिटिक मैक्यूलर ईडिमा कहते हैं, DME. वो आने लगता है, देन योर विजन ड्रॉप्स. फिर आँख में आपको इंजेक्शन डालने पड़ते हैं, एंड इन वर्स्ट केस सिनेरियो सर्जरी भी करानी पड़ती है. बट इसके भी कोई कॉमन सिम्टम्स है फिर कि? सो बेसिकली पेशेंट को नियर विजन कम दिखेगा. धब्बा दिखेगा, बीचों बीच कोई ब्लैक स्पॉट दिखेगा. ये ब्लैक स्पॉट मतलब कौन से स्टेज पे हो तुम जब ये तुम्हें? जब आपको ब्लड बीच में आया हो या आपके नलियों में सूजन आ गई हो, या DME जो मैंने बोला वो हुआ हो, then the patient will have decreased vision for near. और मैं स्ट्रेट देखूंगी पर बीच का मेरे को नहीं दिखेगा, धब्बा दिखेगा, बिकॉज वहाँ पे सूजन है. I'll tell you, these have very guarded prognosis. Guarded prognosis मतलब even after treatment आपका कितना विजन आएगा वो गारंटी नहीं है. सो समटाइम्स द पेशेंट विल कम टू अस और वो बोलेंगे यार मेरे को तो 3 इंजेक्शन दिए, आँख में 4 इंजेक्शन दिए, पर मेरे को उतना का उतना ही दिख रहा है. इट्स अ गुड साइन, क्योंकि वो डिटोरिएट नहीं हुआ है. द इंजेक्शन इज टू स्टॉप यू फ्रॉम फर्दर डैमेज. इफ यू आर वेरी लकी इनफ आपका विजन वापस आ सकता है. बट लाइक यू सेड, बट irrespective of any treatment, if even after that even after taking the treatment you're not controlling your diabetes or your HbA1c or this fluctuation, then nothing can stop you from blindness, and this is not reversible. So I tell everybody that diabetes is, every second person is a diabetic. Every second. Younger people are diabetic because of stress, food, late night eating, whatever you call. People are getting diabetic day by day and they're okay with it. I mean, there's one disease you must stay away from is diabetes. I think it's way against the silent killer. आँख तो एक है, आपके हार्ट बिगड़ेगा, आपका किडनी बिगड़ेगा, you will develop infection in your eye. There's no point. बट मेरा क्वेश्चन यही है कि आपने जैसे ये सारे सिम्टम्स जो बोले हैं, तो ये जब आते हैं तब तक तो ये लेट हो जाता होगा ना. आई थिंक तुम अगर चेकअप कराते रहते, तुम्हारा डायबिटीज है बट वो और कितना तुम्हारी आँख पे सीवियर हुआ है, वो तुम अगर चेकअप कराते रहते तो तुम्हें पहले ही पता चल सकता था, राइट? सो अर्ली कैन बी, अर्ली सिर्फ डॉट्स आते ब्लड के, विच इज ओके, जो एक पेशेंट को तो नहीं पता चलेगा. बट वन फ्लक्चुएशन इन योर डायबिटीज कैन ऑल्सो कॉज इडिमा, सूजन कर सकती है. वन फ्लक्चुएशन ऑल ऑफ अ सडन ऑल्सो.
सो दैट्स द थिंग, रेगुलर चेकअप तो करवाना ही पड़ेगा. अगर आपको पता है कि आपको अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो ठीक है, आप अपने फिजिशियन को मिलिए, डोज को रेगुलेट कीजिए, दैट इज अ थिंग. पर अभी यू हैव नॉट एवर गॉट चेक्ड और आपका चेकअप हुआ है, आपको अर्ली स्टेज ही है, पर सडनली देयर इज वन फ्लक्चुएशन एंड यू विल डेवलप ईडिमा. मतलब आई कैन से दिस फैक्ट कि आंखें भी बहुत रिस्क पे होती हैं. लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं. टू फ्रेजाइल, इट्स टू डेलिकेट. आँख की जो हमारी नलियाँ होती है जिसमें सूजन आती है, इट इज थिनर देन योर हेयर. हमारा जो एक बाल का स्ट्रैंड है उससे भी थिन होती है. सो इमेजिन कि आपको ब्लड प्रेशर हो और डायबिटीज हो तो वो नलियाँ कितना स्ट्रेस लेती है. मेक सेंस. सो दैट फ्रेजाइल योर आई इज. Okay, I'm processing again. Okay, so I mean lot of things that are clear today, जो लोगों को I think जाननी चाहिए. I would really urge ये एपिसोड तो जितने लोगों को मैं पहुंचा सकूं, एंड 2 लोग भी अगर मैं तो ये बोलती हूँ जो एक अपना चेकअप कराने आ जाएंगे ना, आई थिंक इट विल बी ग्रेट. वो 2 आंखें तो हम किस तरीके से बचा पाएंगे. सो इट्स अमेजिंग. एंड मुझे एक लास्ट, आपने सारे प्रोफेशनल क्वेश्चंस तो मैंने पूछ लिए. मैंने आपको बोला था मुझे आपकी पर्सनल क्वेश्चन जरूर पूछना है, बिकॉज दैट इज द आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग थिंग. You lost so much of weight. I lost 70 kg. 70 kgs. From 130 you are now 61. Oh my god. And in how many months? It took me around 2.5 years. How did you do that? I mean I know it's like a 2.5 years आप बोल रहे हो, but it's like a journey. You asked me about. So how was your journey? It was very painful in the beginning because I was addicted to food. Food was my escapism, whatever. I love food. I'm still a foodie. I love to go to Havmor and have one big plate of chole bhature every 15 days. I do that. But my turning point really came when I was diagnosed with hypertension, matlab BP, and pre-diabetic हो गई थी. Now I was around in my 29 or 28 and I realized that I'm developing diabetes and BP and I'm 130 kg and I had PCOD. Now PCOD is basically आपकी जो menstrual cycle होती है that becomes irregular and you do not cyst हो जाती है आपकी ovaries में. So I realized that, what am I doing? I'm just 29 and what will just happen to me? And 130 was a humongous weight. So then that I took it on me, and then one day I went to the gym. I'm like, let me just stay and let me go. And I went to the gym. I was so happy, but I was breathless. I could not even walk for 5 minutes on the treadmill. But I felt like I've done so much and I went out and ate. But then after a month, my doctor said that I'm giving you a month or I'll put you on medication. That was the day I said no. I love food. I will enjoy my food, but maybe sometime later. My body craved sugar. My body wanted food. I didn't want to go to the gym. I had emotional turmoil. But I still hit the gym. I still made sure that I don't have dinner. I do not have dinner since past 2 years, 2 to 3 years. Wow. There are 2 reasons. One is because I wanted to reverse diabetes. When you have dinner, your insulin spikes. And that is the fat storing hormone of your body. So I really made a point that no, I will eat everything, but I will not have dinner. I did not stop carbs. I did not stop fat, or I just did not have eggs. ऐसा नहीं है, just proteins. I had everything, but I made sure I worked out. I did not have dinner. I kept consistency. That was the main thing, because I feel weight loss is an emotional thing, mental game rather than anything else. Exactly. True. So, if you hit the gym for 29 days, it's a fact. If you hit the gym or you make a habit for 29 days, probability is that you will sustain it for lifetime. But those 29 days
the most crucial. Yeah. But then, and once I lost 10 kg, I really got pumped up कि चलो और करते और. Then at 85, I got stuck. उतरे ना, 1 साल हो गया, उतरता नहीं है, क्या है? Again lost motivation. But I kept it. I kept going. And again then. And now it stayed. Now touch wood, I'm stable. Wow. But it's a lifetime modification. It's a lifestyle modification. ये सब है, and it's not easy for a foodie. Yeah. It's not. Even today, I want to eat. I cannot have my tea without chini. I want to have 1 full cup of chini wali chai, but I don't. Somewhere I've drawn my limits, and that's something because I have a tendency to put on. I will put on at any age. True. So as I said, it's a mental game. Exactly. You have to, if you can fight your weight loss battle, you can fight anything. Because the biggest enemy that will come on your weight loss journey is you, yourself, nobody else. वही बोलते हैं ना, जिम्स में भी क्या बोलते हैं कि मेरे ट्रेनर ने कम कराया, बट ट्रेनर ने तो तुम्हें बस एक डिसिप्लिन पहुंचाया है. अल्टीमेटली is only 20%. 70 to 80% is what you do outside the gym. Your diet and your food. Diet and your sleep. And your sleep, exactly. We have the thing is, the longer you stay awake, your body's metabolism to deplete the fat, to eat your fat, to discard your fat will go down. So you will not lose weight. आप diet कर लो, आप gym कर लो, आप कुछ भी कर लो, पर आप सोओगे नहीं अच्छा. You will not lose your fat. True. Sleep is as much important. I feel, at least for young people who are very workaholic, I feel if you can remove just spare 1 hour for yourself. See, gym will help you to increase your metabolism. It will not aid directly to your weight loss, of course. But if you hit your gym 1 hour, you will realize how important it is to eat right. True that. वो फिर तुम्हें लगता है ना, तुमने यार इतनी मेहनत करके ये खा लो, एक समोसा खा लो, 600 कैलोरी. खाओ. I mean, you should eat. Yeah. You cannot sustain like that कि यार बाहर का नहीं खाओ. But it cannot be an everyday thing. और ऐसा नहीं है मैं खा लूँ और जिम में दौड़ लूँ तो I am done. ऐसा भी नहीं होता है. खुद तुम्हारी बॉडी को पता चल जाता है तुम कब सही हो, कितना तुम्हारी बॉडी को चाहिए था. इसलिए फिर ये होता है कि तुमने एक दिन बाहर खाया ना, तो इट्स कॉन्शियसली यू टेक एन एफर्ट और नेक्स्ट डे तुम नहीं खा. I tell everyone, everybody keeps on asking, what did you do? I just said one thing. At the age of 40, if I want to work well and if I want to be healthy for my kids, I have to be fit today. Because that's my lifestyle and that's going to impact my child's lifestyle as well. Very true. Very nice. So, I feel for every young people, it's very important to be fit. I'm not saying to be thin, to be fit. And fit is, staying away from diabetes, blood pressure, everything. Because we've seen fit people have lost their lives also. Yeah. Lately a lot. Yeah, so I go to the gym every day and they lost their life. But it's like a balance of everything that our body needs. I think it's just that we need to do on a daily basis, on a regular basis, and it's all a mental game like it. Mental. I am also actually, through this podcast, I am also trying to make a tribe, because अगर आप देखो, so we have also built a segment. उसके थ्रू ही हम होता है ना कि अगर आप किसी भी इंसान की लाइफ में कोई भी इशू देखो ना, तो it boils back to 3 things. It's either health, it's आप ध्यान से सुनना और आप फिर रिलेट करोगे ना, so it will actually boil down either to health, either to wealth or to relationship. Very true. यही 3 चीजें जो हर इंसान में कहीं ना कहीं रिवॉल्व होकर परेशानियों का रीजन होती है. And that's true. Yeah, very true. That's why we are trying to build, you can say, a community, a tribe where we call it We Detox Together. And we have made a short segment, which is Happy Hour segment, brought to you by our sponsor, Shade Brothers.
तो मुझे एक्चुअली आपने जो ये बात करी, why I wanted to ask this question because you have done so much in your life professionally and personally. I think आपने जो health वाला segment है, wealth वाला segment है, वो तो I haven't spoken much about relationships, but उन दोनों को आपने बहुत अच्छे से battle out किया है. तो मैं आपसे एक चीज़, हर तीनों उसमें जो एक major चीज़ होती है ना, I just want to ask you one question and I want you to tell us and give tips to our users कि how you can detox yourself from these particular things. ठीक है? So when it comes to health, my first question, when it comes to health, how do you detox yourself from all the stress work-wise that you get or probably, out in your life? So how do you detox with all the stress that you get in your life? I do 2 things daily. Okay. Because we are in an environment where we are supposed to deal with stress. Patient is in agony. We are supposed to deal with that. We are doing surgery. Every day I write a gratitude diary. Oh wow. It is my stress buster. And whether I'm sad, I will write. And secondly, I pay attention to my food. I love my food. I don't like tofu, I don't like eggs, but they are going to help me be fitter, so I love them. So nice. This is So very it is nice. very important that you love your food. The food that is healthy for you is to be loved. And your gratitude diary, irrespective of how your day has gone, end it. Even if you're crying, write it down. If you're sad, write it down and go to bed. Wonderful, yeah. I mean, this is very nice, very true, and I think the simplest thing that you can do for yourself. True that. Second, wealth, of course. How do you detox yourself from all the stress that, you want to be there at a certain position, you want to earn more. So how do you detox yourself from all the situations when it comes to wealth? So I let that thought come in me. I think about it. And I don't let it pass out. It's just a thought. I realize that, to create wealth, I must stop chasing it first. People say your work should speak, this should speak. I understand everything. But we are in such a generation where we really need to work on our wealth. We need our money to grow our money. So I feel that younger age is the time where I really make sure that my wealth or whatever my earning is, at least 50% of it should be gone to certain savings. Yeah. 50%. I'm not saying 20% because right now I can afford. When I'm 40, I will have responsibilities and at that time I may not afford. So I really don't overthink about it, but I've made a simple rule. 50% is to be saved and 50% I will use. Do not overthink about it. Wow. And your money will grow your money. वही होता है ना, हर चीज में तुम्हें बैलेंस करना पड़ता है. आई थिंक मनी टर्म्स में वी विल हैव टू बैलेंस. That's the case. When we speak about money and wealth all the time, we go into a vicious cycle of what you don't have. Yeah. And it's never enough. वो जो situation It's होती है. never enough for Mukesh Ambani as well. Exactly. Don't overthink. Make a ground rule and that's it. I mean, daily if you keep on doing it, you're into a vicious cycle of doing nothing then. It's true. And third, I mean, the most important one in today's era, relationships. So how do you detox yourself from all the expectations of your family, your friends, because for many reasons, but there are always expectations. So how do you detox yourself from that? There's a wonderful book I insist everybody to read is Who Will Die When You Cry by Robin Sharma. Yeah. The last 2 lines is very important. Your body is your temple. Take care of it. And number 2, only your spouse, and this is a reality, only your spouse and your money will come to your help eventually when you need. So I feel to make a very solid relationship with your spouse is not a give and take relationship, or it's not 50-50. It's like I'll hold you when you're 20 and he will hold me when I'm not 100%, Rest expectations. People don't have expectations from us. We think that they have expectations from us. So I feel your parents and your spouse
are your fundamentals of your life. They are your pillars of your life. Then comes your friends and then everything. Yeah. But if you can take care of your spouse And both your parents, like your in-laws and your own, you need nobody else in your life. I think that is it. So we do not need to think what people expect from us or what we are supposed to do to meet their expectation. You're enough. Yeah, very nice. I mean, I'm just awestruck, you can say, though at such a young age, you're so clear about life and about, I mean, and actually, this is just coming from the heart. I'm very honestly saying that it's really inspiring when I hear you. The kind of things that you've mentioned when it comes to your physical health, when it comes to your mental health also, and that's why I mentioned professional and personal life. आपकी बहुत inspiring है, and the way you're very clear about stuff, I think it's amazing. I mean, you should be really proud of yourself, like I am. There's one thing I would really like to add about mental health. Yeah. Especially for younger generation, when you feel you are obese or when you don't like yourself enough, there's a lot of judgment made in our society. You know, whenever you meet somebody, the first thing somebody will say, "Yeah, you put on weight. Have you lost weight?" This is the first thing. We do not greet people. We judge people. And when your health is at stake and when you take all these judgment, it's going to break you down. So I really want to tell everybody that before you judge or make a comment on anybody about the way they look or maybe their physique or anything, think twice what the turmoil is in their heart. You know, that is very important. Because I have gone through it and I had become completely asocial. I did not go to people's party. I would not go anywhere because they judge me. And that breaks you down even more than any other disease. True. And if you're not mentally happy, if you're not mentally fit, nothing will come to your aid. Nothing and no one. And सामने वाले को realize भी नहीं होता है कि probably it was for fun or for anything, पर सामने realize भी नहीं होता है कि whatever they said, उसका कितना impact, कितना गहरा impact सामने दूसरे बंदे को हो सकता है. I mean, because you already don't like yourself at that point, and when it's just cherry on the top when somebody's मतलब we already know. We do. You don't have to tell us that oh तू मोटी हो गई है, oh तू पतली हो गई. That's what because I've gone through it. I know it broke me down. So for a year I would meet nobody. And people are okay. They don't want to meet us. So there's nothing like they're dependent on us. You know? True. It's like that. That says a lot. The last line says a lot. It does. Yeah. Wow. Thank you so much, Anshi. I mean, super amazing. I don't have words. I think you can feel the energy, the kind of experience that I had, and literally इतने emotions से आप मेरे को लेके गए हो ना इस particular podcast में, happiness and I really got scared in between, really. So it was really good. I mean, I really feel बहुत लोगों को इसमें काफी help होगा. So thank you so much and wonderful session. So did I. And